all, and welcome to the another edition of Trading Success Beans with me, Kalyan. And today we have a very interesting personality, uh, Abhishek Kar, who seems to be a pretty young gentleman, but I'm told that whenever he attends the trading carnivals and conclaves, he is actually mobbed. In fact, जब हम last week Bangalore में भी थे, तो अभिषेक जी वहाँ पे आए थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्फियां भी ले ली अभिषेक से. So that was my first interaction or first moment of seeing somebody who gets mobbed in a trading event. Thank you so much, Abhishek, for joining and being a part of Trading Success Beans with me, Kalyan. Abhishek, to start with, आपने इक्विटी मार्केट्स में पदार्पण कैसे किया? आपने शुरुआत कैसे की? तो सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच. मतलब ऑलमोस्ट 11 years हो गए हैं. आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली जो स्टॉक मार्केट में काफी समय से थी. इनफैक्ट मेरी फैमिली का स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. एंड जो थोड़ी सी ब्रीफ मेमोरी उनके पास है वो सिर्फ 1992 हर्षद मेहता का है. तो बिल्कुल भी मतलब आप समझ सकते हैं कितनी दूरी है शेयर बाजार से. सो बिल्कुल 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 लाखों कोसों की दूरी है. सो तीन ये था कि कोई इसका नहीं था ना. मेरा कोई बचपन से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बचपन से शेयर बाजार में जाना, क्योंकि बताने वाला कोई था नहीं. सो नो वन वाज देयर टू टेल मी. अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ. सो कॉमर्स में पढ़ते पढ़ते एक बिजनेस स्टडीज नामक एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पर अचानक से कैपिटल मार्केट्स के बारे में रेफरेंस दिया गया था बाय वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स. तो चला गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. और हमको कुछ असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया था जिसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च करना था. और ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब रिसर्च जब आप करते हो, तो इवन जब थोड़ा थोड़ा नया नया इंडिया में इंटरनेट आया, तो आप गूगल पे भी कोई सर्च चीज करते हो, तो अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सर्च करते हो वॉरेन बफेट, तो आपको पहला ही रिजल्ट वॉरेन बफेट का नहीं दिखेगा. काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते थे. मतलब गूगल वाज नॉट दैट एक्यूरेट. तो आई गॉट टू नो वन नेम दैट इज वॉरेन बफेट. एंड थोड़ा सा पता किया तो पता लगा यार कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी आमदनी, मेजॉरिटी ऑफ द आमदनी ही हैज क्रिएटेड थ्रू समथिंग कॉल्ड स्टॉक मार्केट. तो उस चीज ने स्पार्क किया इंटरेस्ट की यार मुझे कुछ अलग करना था एंड दिस कुड बी वन पॉसिबल एवेन्यू जहां पर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ. अब यहाँ से तो स्पार्क हो गया, लेकिन क्या होता है कि असली चिंगारी लगी थी जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाने वाला था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. एंड देयर वाज सम टाइम लेफ्ट and a lot of my friends were actually joining one certificate class which was being done by an HSBC का fund manager at that point of time. He had left HSBC and वो fund management के बाद अपना खुद accounts manager ये सब brokership किया था. At that point of time, vividly I can remember 1200 या 1500 रुपी उसका फीस था, 2-3 महीने का था, which as of now अगर आज ही वो सेम चीज करो तो वो 25-30,000 का हो. तो वन गुड थिंग इज बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिशियंस. मेरे पिताजी भी टीचर, मॉम भी कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड. तो पैसे भले ही उतने नहीं थे, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए अगर मैं कुछ भी बोलता तो वो गिरवी रखते, जमीन रखते, कुछ भी करते हैं, दे वुड हैव गिवन मी. सो दे डिडंट माइंड, बोले ठीक है तेरे को करना है कर. 3 दिन रुका था तो वही रिपीट चलता था, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट. एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भैया स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है. थर्ड या फोर्थ डे पे टर्मिनल उन्होंने दिखा दिए. बस वहां से क्यूरियोसिटी जगी कि भैया ये तो ऊपर नीचे. एंड देन अ फ्यू स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हाउ पीपल ओवरनाइट बिकम मिलियनर. ही डिडंट टेल मी द अदर साइड दैट ऐसे हो जाते हैं, बट जस्ट टू क्रिएट दिस थिंग. And the interesting thing is I didn't even complete that class. That was the only, probably yes, that was the only stock market class which I ever took, and that too I left 20-30% पे. Because I immediately ran towards, उस समय पे क्या होता था, brokers आजकल तो काफी सारे हमको ऑनलाइन है, जैसे एस्प्रेसो हो गया, सारी चीजें हैं, तो आप घर पे बैठ के काफी सारी चीजें कर सकते हो, अकाउंट खोलना है और उस टाइम पे फिजिकल प्रोसेस का ज्यादा जमाना रहता था. एंड देन ये रहता था कि आपको वो एक 50-60 पेजेस के फॉर्म भरना पड़ता था. देन इट यूज्ड टू गो. तो हमारे इधर एक वो रहता था, एक एरिया रहता था जहाँ पर सारे ब्रोकर्स रहते थे उस बिल्डिंग. सो समवन एक्चुअली कन्विंस्ड मी, बिकॉज द ओनली रीजन आई गॉट कन्विंस्ड इज कि उधर ही सबसे कम डिपॉजिट रखना पड़ता था. आई वाज लाइक यार पैसे तो है नहीं, तो सबसे बढ़िया ये. एंड इफ यू रिमेम्बर कल्याण जी कि उस समय पे जो ब्रोकर होता था वही रिलेशनशिप मैनेजर भी होता था, वही आपका एडवाइजर. सही बात है. हाँ सर, शुरुआत करी स्टार्टिंग में तो बिगिनर्स लग थोड़ा सा चला, थोड़ा सा कमाया, फिर उसके बाद गवाया. तो अप डाउन पर ऑलमोस्ट 4.5 years मैंने वेस्ट किया है. मैं वेस्ट कहूंगा उस चीज को, बिकॉज लर्निंग कह सकते हैं, बट आई नेवर यूज लॉजिक फॉर द फर्स्ट 2.5 years. एंड आफ्टर दैट 1.5 years को हम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वहां पर मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि अब लर्निंग पे ध्यान दें. One good point, because I want to give a takeaway to the people who are listening to this thing, Jenny Tsb,
मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि माय पेरेंट्स डिडंट हैव मच मनी. द रीजन आई विल टेल यू, बिकॉज दे डिडंट हैव मच मनी, सो इवेंचुअली आई डिडंट हैव मच मनी टू स्टार्ट ऑफ विद. तो अब क्या होता था कि मैंने 6 बार अकाउंट ग्लो किया, लेकिन दैट वाज लाइक अ कैपिटल ऑफ 1500, 1000, 2000, व्हिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ बिग कैपिटल फॉर मी. बट अगर मुझे उस समय पे मान लीजिए कहीं से अरेंज करके उन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे दिया होता, इफ आई वुड ब्लोन अप दैट, आई मे नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू अगेन गेट बैक. क्योंकि क्या होता है कि एक बड़ा नंबर के लॉस के साथ ना आपका सिर्फ कैपिटल का लॉस नहीं होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसका सबसे बड़ा डेंट लगता है. तो आई फील लकी कि वो मैं बाउंस बैक इसलिए कर पाया कि इनिशियल तो जो लोग पूछते रहते हैं कि हमारा कैपिटल कम है, शुड वी एक्चुअली इवन थिंक, आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम. आपके पास जब होने के लिए ज्यादा नहीं है, इट्स द बेस्ट टाइम टू कम एक्सपेरिमेंट, डू विद कैश ट्रेडिंग. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू. तो वहां से मेरी एक लर्निंग जर्नी शुरू हुई. आई गॉट टू अंडरस्टैंड, आई वाज ट्रेडिंग इनटू अ स्टॉक कॉल्ड रनबैक्सी, जो बाद में फार्मा में लिए. एंड जो लोग पुराने उनको पता होगा कि रनबैक्सी यूज्ड टू बी टॉप ऑफ द टाउन फॉर. एंड तो मैं उस पर ट्रेड करता था. तो मेरे को याद है इंट्राडे पे मैं उस दिन एक दिन था काफी ऊपर भी था, मतलब ऑलमोस्ट, बिकॉज आई वाज हेवीली लेवरेज्ड. दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रोकर्स कुड ओपन 15, 20, 25x ऑफ योर कैपिटल. तो काफी ऊपर था. बट कुछ सुप्रीम कोर्ट का न्यूज आने का था. एंड देन द मोमेंट आई केम बैक होम, आई रियलाइज कि मेरा तो पूरा मतलब अकाउंट ऑलमोस्ट 60% ब्लो अप हो चुका है. एंड दैट्स वेयर द ब्रोकर इंट्रोड्यूस्ड मी टू द वर्ड स्टॉप लॉस. Believe me, this word stop loss has been the essence and the biggest tool which I have so far discovered in the trading. ये 4-4.5 साल मैंने घिसा सब कुछ किया and all those things. Post that, the journey came to break even, and I can say for the last, I would say 5.5 to 6 years, decently profitable, but still a learner into the market. Oh, that's great story, अभिषेक. मैं तो अभी शेयर बाजार में 22 साल से हूँ और आज भी लग रहा है कि शुरुआत ही नहीं किया है. आई मीन रोज देखता हूँ, यू नो, आई एम ऑब्वियसली नॉट ग्लूड टू द मॉनिटर एनीमोर, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि इफ यू हैव टू रन द बिजनेस डोंट लुक एट द मॉनिटर. पर आज भी लगता है कि एक गुगली तो एक दिन में एक बार तो हो ही जाती है, चाहे वो नया मार्जिनिंग सिस्टम हो, चाहे रेगुलेटर का नया मूव हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो. एक ना एक गुगली तो दिन में तो 250 ट्रेडिंग डेज में 250 गुगलियां तो हो ही जाती है. तो यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी हम्बल इनफ. तो एक सबसे बड़ा टेक अवे मैंने ये जो आपने कहा अभिषेक, सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगता है वो ये है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी इन स्टॉक मार्केट्स, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ऐसा नहीं कि आप उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इवन इन करंट सर्कमस्टेंसेस मान लीजिए अगर वो 10 साल पहले लाख रुपया बड़ा होगा तो आज भी लाख बड़ा ही है, डिस्पाइट इन्फ्लेशन एंड स्टफ लाइक दैट. क्यों? So even if you were to start, you start very slow, क्योंकि खोने का डर उतना नहीं है. And as you rightly pointed out, it's not about losing one's capital, it's about losing one's confidence for life. So that's one big takeaway that I'm taking out of this particular, you know, experience of yours. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपके हिसाब से आपका वो सबसे बड़ा सीखने वाला मोमेंट क्या था कि वो सौदा, you can maybe choose to keep the stock out या जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आपके हिसाब से अरे यार ये नहीं करना था, ये मोमेंट कब हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ? बेसिकली इस तरह के मोमेंट तो अभी भी आते हैं, अभी कम आते हैं, पहले ज्यादा आते थे. So I'll talk about 2 particular incidents because I believe both have good amount of learnings for the audiences. तो पहला था कि यू नो जो आजकल तो होता है, लेकिन पहले, आज से मतलब मैं बोलता हूँ 8-9 साल पहले, आईटी रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा चेरिश किया जाता था. एवरीवन यूज्ड टू वेट फॉर सम द टॉप रिजल्ट्स, क्योंकि वो ले डाउन करती थी फाउंडेशन फॉर अदर दिस थिंग. इंटरेस्टिंगली, जैसे कि हम एक बैंक का जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसका माना जाता है कि वो हर क्वार्टर में काइंड ऑफ गुड प्रॉफिट और वन ऑफ द सेम वो देता है. लाइकवाइज कुछ ऐसे 2-3 आईटी कंपनीज थी जिनसे हमेशा उम्मीद रहती थी कि दे आर गोइंग टू पोस्ट प्रीटी डिसेंट रिजल्ट्स आउट देयर, दे आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट. तो अब क्या होता था कि मैंने अपना बैक टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मैंने थोड़ा अपना एनालिसिस किया, थोड़ा सा पता किया कि लास्ट 30-40 क्वार्टर रिजल्ट्स में उस पर्टिकुलर आईटी फर्म का कैसा रिजल्ट रहा है. काफी मतलब मेरे को लगा कि प्रोबेबिलिटीज अच्छी हैं ऊपर की तरफ. तो मैंने एक मिस्टेक क्या करी थी, मैंने उस समय पे ऑप्शंस पे ट्रेड किया. ओवरनाइट पूरे का पूरा मैंने कॉल्स उठा लिए थे उस पर्टिकुलर आईटी.
एंड ये तब मेरे को अभी भी याद है, ये होता था करीब करीब 9 बजे कभी कभार वो उनका अनाउंसमेंट आता था जस्ट बिफोर द मार्केट ओपन्स, एंड उसके बाद वो पूरा गेम उस हिसाब से होता था, प्री ओपनिंग में आपको दिख जाता था. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गेट अ शॉक कि यार इस बार द थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन माय फेवर. एंड द अनदर मिस्टेक विच आई डिड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझनी होगी, बिगिनर्स को भी समझना होगा कि आप किसी भी इवेंट के पहले जब ऑप्शंस खरीद लेते हो तो आप वैसे भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस ऑप्शन के लिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड आईवी, सो यू आर एक्चुअली यू पे मोर फॉर दैट विच यू डोंट रियलाइज. तो पहली मिस्टेक मैंने वो कर दी. दूसरी चीज है कि उसके बाद जब वो नीचे गया, मैंने ना अपना वो पूरा पोजीशन काटा 50% लॉस पे, विच इज आई शुड हैव आइडियली कट इट ऑफ जब दिख रहा था लॉस. अगर मैं 920 930 पे भी करता तो 20-25% का लॉस, 30% का लॉस होता, बट आई केप्ट ऑन होल्डिंग एंड 50% का किया. तो दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि रिजल्ट्स जो होता है, a lot of people keep on asking me and even for you people पूछते रहते होंगे कि इसका रिजल्ट आ रहा है क्या लगता है, उसका रिजल्ट आ रहा है ये ले लूं क्या. My realization was literally nobody knows what is going to be the result. We are making our assumption. And if you are going all in into a result, you are simply gambling. That is where you have to draw a line between क्या trading होती है, क्या gambling. यहाँ पर मैंने gambling करी थी, जो कि मेरे को बहुत बड़ी सीख दिख गया. तो that is the first thing कि result day के पहले आप ये speculation मत करो. दूसरा था जब क्या होता है कि मार्केट में जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने लग जाते हो. आई टेल यू फॉर एग्जांपल, जब मैं पीजी में था, देवर पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी अफवाह चलती थी, रूमर्स चलती थी कि अभिषेक हैज रिकवर्ड हिज एंटायर फी थ्रू ट्रेडिंग, एंड टू सॉर्ट आउट द रूमर्स दैट वाज अ रियलिटी, अ लॉट ऑफ माय फीस वाज रिकवर्ड. तो अब क्या होता था कि मेरा बिलीव नहीं करेंगे, एज अ स्टूडेंट करीब मेरा हर दिन का ऑलमोस्ट 10 से 12-15 हजार रुपए बन रहा था हर दिन का, बिकॉज आई वाज गोइंग, मैं बताता हूँ क्यों बन रहा था वो चीज. एंड दिस वाज गोइंग ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स. नाउ जस्ट इमेजिन फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अगर आप दिन का इतना बना रहे हो तो आपका ईगो एक अलग लेवल पे जाता है. आई हैड ऑप्टेड आउट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, आई हैड गिवन इन रिटन एंड विदाउट माय पेरेंट्स बीइंग नोइंग दिस थिंग. तो ऑप्ट कर लिया है. अब तो दिमाग में प्लान बना लिया कि अब तो बस यही करना है, अब तो कुछ और करने की सोचने की जरूरत ही नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस इज आई एम ऑल इन इनटू फ्यूचर्स ऑफ सर्टेन पीएसयू कंपनीज, पीएसयू बैंक्स की बहुत सारे उसमें जा चुका हूँ. एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ न्यूज आने लग जाती है, न्यूज कहाँ से आती है आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड देन एक डाउनवर्ड स्पाइरल में ये चीज जाने लग जाती है. एंड देन मैंने जो पूरा सपना देखा रहता है वो धीरे धीरे चूर होने लग जाता है, बिकॉज आई एंड अप लूजिंग. तो यहाँ पर मैं मिस्टेक क्या करता था कल्याण जी, आई टेल यू. सो दिस इज द टाइम व्हेन आप ओवरनाइट फ्यूचर, जैसे एक मिनी निफ्टी करके होता था और काफी सारी चीजें होती थी, तो आप 20-25,000 के अंदर ओवरनाइट यू कुड कैरी फ्यूचर्स. आज के टाइम पे जो 1.2-1.5 लाख मिनिमम लगता है, तो वो था. तो मैं क्या करता था कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, 20,000 का मैंने किया, मोमेंटम अच्छा मिलता था. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक ADAG, उसमें सारे स्टॉक्स में अच्छी वोलेटिलिटी मिलती थी, ऊपर नीचे हर जगह पे FNO में ट्रेड होते थे. ऐसे काफी सारे थे, जयप्रकाश ग्रुप के भी काफी एक्टिव रहते थे, चाहे JP हाइड्रोल हो या जो भी. तो व्हाट आई यूज्ड टू इज कि लेट्स से मेरे पास आज 20,000 है, आज 20,000 पे मैंने लेवरेज लेके 10,000 बनाया, मैंने 2 ट्रेड किए तो वापस मैंने 20,000 बनाया, तो नाउ है 40,000. तो मैं पूरे 40,000 के अगले दिन 2 लॉट खरीद. So as long as it was working beautifully कि हाँ यार. But what I didn't realize कि एक position sizing होनी चाहिए, risk management होनी चाहिए. All in में अगर जा रहा हूँ, एक ना एक दिन फटका पड़ेगा markets, and that is exactly what happened with this PSU incident, because I was like futures में 50 लॉट 70 लॉट ऐसे करके मैं जा रहा हूँ. तो obviously that had to happen someday, and this happened at that point of time. So that gave me the biggest lesson that if you are having, let's say, 1 lakh rupees, I'll just try to quantify it for the people. 1 lakh rupees in your account, आप हमेशा ओवरनाइट पोजीशन जब लेके चलते हो, मैं तो यही करता हूँ, लास्ट 5-6 साल से यही करता हूँ. मैं हर दिन इमेजिन करता हूँ कि नेक्स्ट डे मेरे अगेंस्ट पोजीशन खुलेगा 10%. इट्स कॉन्ट्ररी थिंकिंग. हर कोई बोलता है कि वो ऊपर जाएगा, मैं हमेशा ऑड में सोचता हूँ. And then I try to ask myself at 320, like before I finalize my position that मेरे को carry करना है कि नहीं, कि if that happens, will I be in a position to bear the loss which will happen at that point of time. अगर मेरे अंदर से आता है कि नहीं यार, अगर 10% का ये हुआ तो मेरा कैपिटल का 30-40% जाएगा, तो I don't take that position, I just cut it off right away. अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो मैं अपनी पोजीशन साइज कम करूंगा. सो लेट्स से इफ यू हैव 1 लाख का कैपिटल, प्लीज डोंट टेक 1 लाख वर्थ ऑप्शन. इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल, एट मैक्स टेक 20,000 का ऑप्शन, सो दैट नेक्स्ट डे अगर आपके अगेंस्ट 10% भी खुलता है, तो आपको फर्स्ट टिक में एटलीस्ट वो 30-40% का ड्रॉ डाउन दिखाएगा, बट दिस टाइम वो 30% ऑन 20,000 दिखाएगा, जैसे 6,000 का लॉस होगा. 6,000 6% is still manageable in derivatives, but आप just imagine
करूँ, अब 1 लाख पे लेके जाओगे, पहले खुलते ही 30,000 दिखेगा, योर ब्रेन वुडंट वर्क एंड यू विल एंड अप डूइंग मोर मिस्टेक्स. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेसन. Oh, so that speaks volumes about the risk management module that you've kind of put in place, that if you want to take it up overnight, don't punt beyond 20%. कुछ हो ना हो, रात को अच्छी नींद आ जाएगी, most importantly, right? Is there a daily target that you have in your head, whether it's intraday, whether it is positional, whether it's swing, whether it is in options, किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप ले लीजिए. अगर आप बाजार में करते हो तो 9 o'clock को आपको लगता है कि if it is 1% मैं निकल जाऊंगा, if it is 5% in a week, ऐसा कुछ सोचते हो क्या? So पहले मैं डेली रखता था, but then eventually I realized it is more of a pressure because every day you cannot perform. सचिन भी हर दिन आके क्रीज पे छक्के नहीं मार सकता था, वो भी बहुत बार 99 पे आउट होता था. So then I made it realistically towards a monthly target when trading was my only source of income. Then I realized that if I have multiple avenues of earning this thing, my trading can improve. तो ये एक और गलती होती है कल्याण जी, सबको लगता है कि ट्रेडिंग मतलब फुल टाइम ट्रेडर मतलब वही करे. एंड आई वुडंट जस्ट कोट इंडियन एग्जांपल्स फॉर पीपल बिकॉज हम लोगों को गोरी चमड़ी पे ज्यादा भरोसा रहता है, तो आई कोट दोस थिंग्स. So Mark Minervini, he's a US champion trader. He has written some good books. He was covered by Jack Schwager in a wonderful book called Market Wizards. He has multiple avenues. So for example, he runs training in Indian INR that costs 4.5 lakh rupees per student, which for Indians is quite expensive, but there are so many people who paid for US. So he has that. He trades, he invests into real estate, he has multiple income. Even in Indian example, you talk about Radhakishan Damani sir. So Damani sir, even before he was popular, like even before people knew, he was running a good broking house. So he had his brokerage income. Then he used to speculate, invest, real estate, and now he has V-Mart. So he has multiple revenue streams. So you know that helps you. आपका mind थोड़ा relax रहता है वहाँ पे, ये वाली चीज रहती है. तो जब मैंने ये अपने avenues बढ़ाए, तो फिर मैंने अपने आप को चेस करना शुरू किया कि यार 1-2 महीने का 2-2 महीने का हिसाब से आई हैव टू कम नेट पॉजिटिव, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई शुड बी एस्पायरिंग फॉर. एंड देन एनुअली आई ऑब्वियसली देयर आर 2 काउंटर्स टू ट्रेडर्स. सम पीपल से कि अगर हमने 15% भी ट्रेडिंग करके साल भर का कमा लिया, इट इज गुड इनफ बिकॉज एनीवेज इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं. बट वंस यू रीच अ सर्टेन ब्रैकेट, सो फॉर एग्जांपल जब मेरा ऑडिट पे जाता है, जब टैक्सेस का आने लग गया, तब मैंने रियलाइज किया कि एक एफएनओ ट्रेडर को टैक्स का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज अगर आप सिर्फ 15% के लिए कर रहे हो, नेट द काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, यू आर एनीवेज नॉट टेकिंग मच इनटू. तो मैंने अपने आप को एक वो टारगेट देके रखा हुआ है, which might sound outrageous to a lot of people, but 36 to 40% in a year, considering the size of the capital which I am having, is decent because उसके बाद मेरे टैक्स और ये सारे हटने के बाद जो वो कंपाउंड होता है, that comes out to be a very decent number. Another thing which I particularly focus is that market की volatility dictate करती है आप कैसे बनाओगे. So for example, 2020 and 2021, to be very honest, I made huge in the sense if I put those numbers, some of my students know, some of the people know in percentage wise, there's huge. But I make sure that आपने एक starting में शब्द कहा कि market में humility रखनी चाहिए, humble रहना चाहिए, वरना आपको भी पता मार्केट क्या करता है. तो आई डोंट कंसिडर दैट एज दिस थिंग. मैं उसको एक आउटलायर ईयर समझता हूँ जो मेरे लिए था. मेरे लिए ये है कि इक्विटी कभी एक लीनियर फॉर्म पे, चाहे ट्रेडिंग करो इन्वेस्टिंग करो, वो आपको लीनियर फॉर्म पे रिटर्न नहीं देती है. वो थोड़ा देगी, फिर हो सकता है 2-1 साल आपको ज्यादा नहीं देगी. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक स्टैंडर्डाइज अगर करना है तो एक 36% इन अ ईयर, that comes out to be a decent number for me considering my size of capital. but जिन लोगों का छोटा कैपिटल है, because obviously आपके जो वीडियो देखेंगे वो लोग बोलेंगे हमारा तो कैपिटल नहीं है यार दोस्त, हम क्या करें. तो मैं ये भी बता दूं कि जब छोटा कैपिटल होता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपिटल थोड़ी ज्यादा होती है. अगर आप लर्निंग कर सको, लिक्विडिटी का आपको इशू नहीं होता. देखिए 1 लाख में आपको जो स्ट्रैटेजी लगानी, जो ऑप्शन में जाना आप कर सकते हो. इनफैक्ट आई वुड से टिल 30 लाख 40 लाख यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट वंस यू स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड लेट्स से 1 CR 2 CR 3 CR, तब आपका गेम कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन का हो जाता है. तो आप इनिशियली कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो विद स्टॉक लॉसेस, बट वंस योर कैपिटल गोज अप, तो भाई आप ये सोचो, सिंपल सा है, 1 लाख पे 10% वोंट एक्साइट यू, राइट? बिकॉज 1 लाख पे 10, बट नाउ 1 करोड़ पे 10% वुड डेफिनेटली एक्साइट यू. तो बड़ा कैपिटल पे योर एम शुड बी कैपिटल प्रिजर्वेशन, छोटे कैपिटल में कैपिटल एप्रिसिएशन फॉलोड बाय कैपिटल. Fantastic. I got that logic very well. Now, जैसे आपने बताया कि I mean you had your learning stories about PSUs when you were a PG student and stuff like that.
Right. And then obviously market taught you the biggest lesson possible then, maybe 5 years, 7 years, 10 years down the line. Uh, Now, if I turn the story a little positive and say, when did you realize that, you know what, despite this learning, you had your share of learning and disappointments and 60% of your capital getting written off and stuff like that. Now, after that journey, when did you discover that, yeah, despite all this, I think, I have this calling in me that this is what I'm meant for. Aapko kab laga? Is it because of couple of saudas or experiences or Uparwala? What was it? So interestingly, I'll tell you, after my biggest drawdown, which I don't mind sharing also, it was 21 lakh rupees on this particular trade, which is a big amount. So, अब scene क्या होता है कि obviously couldn't sleep, and after this kind of loss, you can't. So even today's date, I think so. This is a big amount for anyone if someone invests. Okay. So the thing is, I luckily stumbled upon some motivational books, and I had luckily started reading a couple of books, and then YouTube wasn't a big thing at that point of time. It was just picking up at ये थोड़ा motivational tapes, CDs, and ये सारी चीजें. And then I realized that anyone who has succeeded in their life and reached the first 2% irrespective of whichever profession they pick, they have never seen a linear fashion just like equity. They have faced a lot of downturns, but it's that willpower, grit, and determination which kept them going. So it sounds little motivational, but this is exactly, sometimes you need to have faith in yourself, belief in yourself that whatever years you have put in down, वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देगा. तो पहली चीज तो वो थी. दूसरी चीज, मैंने आज काफी लोग इसका एग्जांपल देते हैं, बट मैं बहुत अर्ली स्टेज पे इस चीज को समझ गया था कि यार एक डॉक्टर को बनने में 9-10 साल लगते हैं जिससे वो अच्छा कमांड कर सके सैलरी. एक सीए को भी सीए कंप्लीट करने के बाद भी एक अच्छा प्रोफेशन में कमांड करने के लिए 7-8 साल लगते हैं. सो any profession which is giving you, let's say, annually 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh is demanding so much. ट्रेडिंग में तो कोई लिमिट ही नहीं है. तो आपको यहाँ पे तो कुछ साल तो देने ही पड़ेंगे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. And final observation was that at some point of time, at least I have multiplied my capital, right? Although again it came down. So that was giving me that I have done some mistakes. The moment I start to rectify those mistakes, to make better position. And the boost in the confidence came after this 21 lakh when I recovered this amount in just 4 to 6 months, like steady recovery. And that is the fastest recovery, I think, for myself. I'm not benchmarking with others. And once you fall down and systematically, main था कि अब मैंने systematically इस चीज को recover किया, not risking more than 3%. I know standard is 1%, but मेरा मानना है practical time पे जाते हो derivatives करते हो तो वो 1% follow करना, unless you have a very huge capital, it's not possible. तो उसको 3% पे अपने आप को कैप करना, स्टेडीली ग्रो करना. जो पहले मिस्टेक करता था कि 20 पे 20 बन गया तो पूरे को नहीं डालना है, अलग करना. देन मैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज भी लगाने लग गया. इन द सेंस आज उसका मतलब मेरे को पता है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, बट इन द सेंस यार मार्केट कभी पलटा तो उसको हेजिंग भी आप कह सकते हो. तो यस, आई हैड सम दिस थिंग. द ओनली डिफरेंस आई यूज्ड टू डू इज, लेट्स से आई एम वेरी लॉन्ग इनटू निफ्टी, जूनियर निफ्टी मैं अगर हो गया हूँ तो मेरे को अगर वीक स्टॉक्स अगर कहीं पे दिख रहे हैं अदर देन निफ्टी तो मैं उनके पुट्स खरीद के जाऊंगा, सो दैट आई एम नॉट जस्ट रैंडमली बाइंग द पुट्स आउट देयर. सो इट्स नॉट टेक्निकली हेजिंग, बट हाँ एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ उस पर रन करने लगे. तो जब मैं सिस्टमैटिकली उस चीज को रिकवर करके उस लेवल पे पहुंचा उस दिन मैंने पार्टी भी करी, बहुत मतलब एक रिलैक्स फील हुआ. तो देन आई रियलाइज कि यस, मतलब एक अंदर से फीलिंग है कि यस अभिषेक, यू आर राइट, इफ यू कैन जस्ट हैंडल दैट इमोशनल स्ट्रेस एंड कम. हाँ, इसमें मैंने एक चीज करी थी कि आई प्रेफर्ड आइसोलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यूजुअली मैंने देखा है इंडियन सोसाइटी, नॉट जस्ट ट्रेडिंग इन जनरल, इज slightly negative. They create a lot of pessimism around. You want to start a business, there will be 10 people to drag you down and 1 people to support. There, you want to start trading, 10 people who will be naysayers and on one. So मैंने अपने आप को थोड़ा confine कर लिया, isolated कर लिया उस टाइम के लिए, ताकि मैं सिर्फ वो अपनी positive वाली books पढूं, positivity रखूं. And then that helped me out, and then there was no looking back. Like steadily there was a great. Now having started your journey from 2011, and it's about 11 odd years that you have been, is there any specific practice or any specific list of things that you do to keep getting better at what you're doing? Obviously there is a huge YouTube channel that you run, and there are whole lot of subscribers, and we hope and pray it goes to millions and billions. But your core, which is how you fell in love with the market, is there anything that you do specifically to keep honing your skills? Yes. One is reading, obviously, and now a bit of versatile reading. So the problem which I faced initially, and even today traders faces, we don't have a lot of good Indian authors writing about the stock markets. There are a couple of books,
But when I specifically talk about trading, you would still find the best of the best Indian traders. They would quote international authors only. And that's not because we don't like Indian authors, it's just that substance is missing. So for that purpose, very purpose, I try to read a lot of stuffs which are outside the Indian genre, so that I get an idea about these hedge fund managers are thinking, how we can actually evolve around this thing. So that's one. So reading, learning is something. Podcast, thanks to internet era, we get to hear a lot of podcasts through which we can. So based on my problem statement, I listen to a lot of podcasts. So that's one. Second is, I have started re-evaluating almost every year, because what I've realized is the moment your scale keeps on going up, you cannot replicate the same things that you did with the same smaller capital, as I mentioned. It's a capital appreciation versus protection. So there is a substantial part of money which also goes for wealth generation. So see, trading is for cash generation and investing becomes for wealth generation. So a lot of amount which I make through trading or irrespective of various avenues, I intend to put that into investing into some good stocks also. And there's one particular portfolio which I call my Vijay Kedia portfolio, not trying to replicate Vijay sir, but taking small caps, thinking that yes, if even out of those 10, 20 stocks, even if 2, 3 outperform the markets several times, my thing is done. So that's one capital. And lately, to improve my game, what I've actually started doing is I've started spending lesser time on the trading screen. In the sense, it's like the more time you spend in the initial years, it's good for learning. But the more once you raise your capital is higher and all those things. If you're staying glued towards your screen for the entire day, I think that's more counterproductive, because you will have impulsive decisions to take. You'll have some random things. So my thing is, in the morning, of course, for 1.5 hours around day, if some active positions are there, specifically on expiry days, then yes, I'm active. Otherwise, it's like after 2:30 is where I get the move. So now I know my time zones. My time zones are between 9:15 to 10:30 or max 11. That's the time zone where I trade most, considering the volatility and the liquidity which I get. And the next one is around the end of the day. So these are a few things which I actually do when it comes to my trading. Great. And what do you do to maintain your sanity levels? What is Abhishek beyond the trading, investment, and YouTube zone? Is there anything more to Abhishek's personality? I travel a lot. In the sense, I love my country, so I believe that our country has so many beautiful locations. इतने प्यारी प्यारी जगह हैं, अगर आप explore करेंगे तो अच्छा लगेगा. And in fact, a lot of people know this thing. In a month, maybe because of commitments, sessions, and to be very frank, I've not yet conducted any of my own physical workshops. It's just that I get invited to go to a lot of those things. So मैं महीने में करीब 15 से 16 दिन बाहर ही रहता हूँ. I travel करता रहता हूँ. That keeps my sanity alive. That's one. Big time foodie. So wherever I'm exploring, I'm also having different types of foods out there. Third, यार एक मैं बहुत अच्छी चीज करता हूँ, that is, I think everyone can do this thing. So in my college days, I used to be active in terms of, I used to do gymming and all stuff, but midway, once you get into the real time world, slowly we fade away. But I walk. So basically, even despite having so much of food out there, because I'm traveling so much, I walk a lot. In fact, minimum, this would be surprising for a lot of people, but last 6-7 months, my minimum 6,000 steps every day I've walked in. And I think it's a better mark to market thing which I watch through my smartwatch. Absolutely. So these are a few things which I do. Wow, that's been quite an exhilarating conversation, Abhishek. Thank you so much, Abhishek, for your time. It was so much fun learning and listening from you, and I'm quite sure that our viewers will also have had as great a time as I had talking to you. So, dhanyavad, Abhishek. Thank you so much for sparing your time in this show called Trading Success Beans with Kalyan. Thank you. Thank you so much for inviting me, Kalyan. Hopefully, everyone will have some value. Thank you so much. Thank you. We understood from you multiple things. One is how to hold on to your horses and keep getting at it despite the mid-term challenges that you would have faced. सबसे बड़ा takeaway मुझे लगता है वो ये है कि if you want to start your journey in stock markets, start with a very small amount. Don't fund beyond 20%. कुछ हो ना हो, रात को अच्छी नींद आ जाएगी, most importantly. Right? What I also learned today was that apart from your trading passion, have multiple avenues. You also invest your created capital into maybe other asset classes or stocks
but for slightly a longer period of time, and more importantly, have a life beyond the realms of capital markets, because that's what keeps you sane and healthy. That's what we get. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.